Construction of bioethanol plant under construction at this point of time. And lastly, this is to remind and request, we'll be touching base with you one by one. We have an investor meet in January. This is immediately after the Pravasi Bharatiya Divas in Indore, and all of you are welcome. Thank you. Thank you, Mr. Shukla. A popular phrase goes by, the proof of the pudding is in eating it. खाना कैसे पका है वो तो चखने पे ही पता चलेगा. So today amongst us we have industry representatives who have done business in the state and will share their experiences to help you make an informed decision. So first I would like to call upon Ms. Sindoor Mittal, Vice Chairperson, Avada Group, to give her address. Thank you. Honorable Chief Minister, ladies and gentlemen, it is a privilege and an honor to be here among all of you today. The state of Madhya Pradesh has always been a place for entrepreneurs and industry to bloom. You heard enough about what the state has to offer, so I don't want to delve into that. I want to share our personal experience. Avada has been closely associated with Madhya Pradesh since its inception in 2009. Our company Avada, which was earlier known as Welspun Energy, had conceptualized and developed in 2009 two very large-scale thermal power projects in two districts in Madhya Pradesh, Katni and Anuppur. We also did one of Asia's largest at that point in time in 2013, a 151 megawatt project in Neemuch. That was a solar power project. At the time it was Asia's largest project. I'm sure the Honorable Chief Minister would remember the inauguration with Shri Narendra Modi ji. We are now currently putting up double the size of that project, a 280 megawatt project, again near Neemuch in Agar under the Ramsal bid in Madhya Pradesh. Madhya Pradesh, when we went in 2009 to our board saying that we want to develop these large-scale projects in Madhya Pradesh, we were asked a lot of questions, there were a lot of doubts, everyone in the board had a lot of questions. Fortunately, we went ahead with the investments, and today the proof is in the pudding, as one says. We are now considering putting up a manufacturing plant in the state of Madhya Pradesh for solar cells and modules, and the discussions are ongoing. But I want to add three primary factors that hits in India. We've set up projects across these states, and I want to talk about three main things that have really been beneficial to us and helped us in the state of Madhya Pradesh. I think number one has been the commitment from the entire state government. Right from the time we started, it's over a decade ago, it has always supported investments. They walk the extra mile to develop solutions that really complement the needs of the industry. So that basically means we have very easy access to all the bureaucrats we see here today, all the government officials. Anytime there is an issue, it is very easy to go to anyone, and we always have the support. The availability of land, as Sanjay Shukla ji mentioned, it's extremely easy. We're doing land acquisition of thousands of acres in so many different states of India. I would say Madhya Pradesh, ease of access of land is number one. And finally, the availability of skilled and semi-skilled manpower. I think that really makes a difference, and it has been a boon for us. We hope to work closely with the government of Madhya Pradesh on our future projects and hope to start its construction soon. And on behalf of the entire industry today, I would again like to congratulate the entire team from the government of Madhya Pradesh, which has put in tireless efforts in the successful organization of such a grand event. And I invite all of you to the Investor Summit on behalf of the government in Indore. It has been an extremely beautiful experience the last few years we've been there. And you must look at Madhya Pradesh for your future investments. Thank you. Thank you, Ms. Mittal.
I'd like to now call upon Mr. Rajneesh Sancheti, Group President, Prism Cement, to share his experience. Honorable Chief Minister Shivraj Singh Ji Chauhan, Honorable Industries Minister Rajyavardhan Ji, all the dignitaries on the dais, and the leadership of Madhya Pradesh, I would like to bring a different perspective before you. See, as an investor, anybody who is investing in Madhya Pradesh can be assured that the incentives which are committed are getting disbursed, very unlike other states where you do not get your incentives in time. So I must thank Madhya Pradesh and MPIDC in particular for an outstanding track record of disbursing investments. We are present in other states where, we don't get our incentives. They are only committed. So Madhya Pradesh is one which disburses incentives. Since I have only 2 minutes, I'm told, one more very important thing which I want to bring to your notice is that, look, people go to remote areas to set up industry. The biggest problem over there, apart from other challenges, is employee retention. So I am very happy to share, मध्य प्रदेश में जो ऑलराउंड डेवलपमेंट हुआ है, उसकी वजह से आज एम्प्लॉय उधर खुश है. वी आर एबल टू रिटेन एम्प्लॉयज. दैट्स वेरी वेरी क्रिटिकल. आप इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट लगा देंगे और आपका एम्प्लॉय नहीं रुकेगा उधर, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी. सो मध्य प्रदेश के अंदर ये एक बहुत अच्छी चीज हुई है. ओवरऑल डेवलपमेंट बहुत अच्छा है. सो आई विल जस्ट शेयर विथ यू ओनली वन मोर स्मॉल फैक्ट, आधा मिनट ओनली, नॉट मोर. हमने एक नया यूनिट लगाया है अभी, विच इज जस्ट गॉन ऑन प्रोडक्शन, जो रेडिएशन शील्डिंग ग्लास बनाता है. दैट इज समथिंग जो कि न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर मेडिसिन के अंदर यूज होता है. वो वर्ल्ड में देर आर ओनली 4 कंट्रीज विच आर मैन्युफैक्चरिंग. इंडिया में हम अकेले हैं एंड इट इज ओनली इन मध्य प्रदेश वेयर वी आर मैन्युफैक्चरिंग इट. अब ये चीज लगाने के लिए एम्प्लॉय रिटेंशन बहुत जरूरी है. एम्प्लॉय चला गया तो हम नहीं चला सकते वो प्लांट. सो आप आइए, प्लीज इन्वेस्ट इन मध्य प्रदेश. यू विल बी वेरी हैप्पी टू. थैंक यू सो मच. Thank you for sharing your positive experiences about doing business in Madhya Pradesh. May I now call upon Shri Rajyavardhan Singh Datigaon, Honorable Minister, Industrial Policy and Investment Promotion, Government of Madhya Pradesh, to give his address. Welcome all. In presence of our Honorable Chief Minister Shivraj Singh Ji Chauhan Sahib, both our Principal Secretaries, Mr. Sanjay Shukla, Mr. Manish Singh, newly appointed MD, Mr. Manish Singh again, and of course Sunil Choudhary ji, who's been putting a point forward very well. I also thank both the industries who just shared with you the experience of them being in Madhya Pradesh and why you should also join them and reap the benefits of what we have to offer. You briefly saw the presentation by our Principal Secretary Shuklaji, whereby he highlighted what the strengths are. And believe me, we have continuously been on the job and trying to improve on any suggestions that have come to us from people like you. Primarily due to the fact that there's nothing like on-the-job training. So let me go back briefly because I've got about 10 minutes to speak before the Chief Minister comes in. The COVID was a global pandemic, and I think it has forever changed how we work. Post-COVID world is something totally different. A lot has been said about it, and it's not that I'm praising my Chief Minister on his face, but I'll honestly tell you, last time I realized that most of our hospitals didn't have oxygen.
you know. That's when we realized that we were lacking in ICU beds. That's when we realized that there was a lot more that had to be done. And he would work around the clock, 20 to 22 hours a day, literally calling up the drivers of the cryogenic tankers that were ferrying the oxygen from the various plants across the country. We were taking a lot of it from the steel plants. So much so, there was a time when he took a call that we actually going to airlift them. And simultaneously he called the health secretaries and the other departments and told them, we have to immediately look at this. And all our hospitals today, practically all our hospitals have inbuilt oxygen plants. We have INOX who's going to start production. We have in Vikram Udyogpuri, medical devices park that is coming. And that is one thing that's going to help our state export engineering assisted products. Now you will say, oh, well, why not Bangalore or Hyderabad or Pune? So maybe they have a lead. But you know who mans those centers? People from our state who've been technically trained and educated in Madhya Pradesh. Majority of those people are from our state. Indore probably is the only city in the country that has both an IIT and an IIM. So I will just shortly take you through and then leave the dais to the Honorable Chief Minister. Out of whatever Sanjay Shuklaji presented to all of you, I would tell you that food is our strength. I think Madhya Pradesh can come up as a food security destination probably for the world. And I say that very, very proudly, as you saw in the presentation. 11 to 12 climatic zones. How many places, how many states, how many countries have that? You have the entire Nordic region where a lot of times you don't even see the sun 365 days a year. You've got the Middle East there. So we offer you everything from strawberries to garlic to onions to grams to all kinds of rice which we call dhan in Hindi. Wheat procurement, we are number one. Sarbati is known all over the world. Oranges, we even have a winery there. I'm not really vouching for the quality of it, but yeah, there is a winery. We go great with that. I don't know how many of you knew about that. So food is one thing that you should all look at and seriously look at, because we have great quality pulses there, horticulture there, everything available in our country. I'm sure a lot of you are. And that's when we realized that the cost on logistics here is about 14% of the international average, about 6 to 7%. So there's a gap. When 50% of the market is in and around Madhya Pradesh, within 24 hours you're in any part of the country. Like Amazon and Flipkart, they've all been coming, all been looking. So that's another area you should look at. Ecosystem. We've got Force Motors there. We've got practically the entire Eicher Volvo group there. We've got John Deere there. Please have a look at it. Madhya Pradesh has the right ecosystem, and we would offer you what you need. Textiles now. The Honorable Chief Minister about 3-4 years back took the decision that why should all the textiles look anywhere else? We have great organic cotton in our state. So he went south, even to Thrissur. He took the initiative. Look at what happened today. We have best corporation there. Trident. Apparently they make every third towel in the world. Arguably, I don't know. That's what I've been told. Gokul Das, Pratibha Syntex, Arun, Vardhaman. We probably will get the textile park soon. So that's another area that all of you are welcome to consider, come, look. We've got specific policies going out. Ethanol, we all know the government of India is looking at the mix of bio and fossil fuels. We have a target of 20% mix. I know Brazil is the leader, we do import a lot of it from there. But then again, a great prospect in Madhya Pradesh because we have everything available there. We've got
rice there, we've got corn there, we've got everything else, other ingredients that go into it. We've got them all there. We've got a separate ethanol policy as well. Similarly, we looked at EV, having a policy for that. Abundant water there. Narmada is right there. So anybody who's looking at the future fuels, energy, which is hydro, or you guys can again come in and Madhya Pradesh would offer you what you need. And renewable energy, we talked a lot about it. 1,22,000. That's the land bank we have. Huge, tremendous. And there's much more that we can create for you. So we're already doing good work in wind, great work in solar. So I invite all of you there. That's another area. Tourism. You can look at what Madhya Pradesh has from Khajuraho to Amarkantak to Ujjain, Mahakal. Look, Mukhyamantri ji ne itna acha kaam kiya, you'll be amazed to look at it. PM was recently there on his birthday, and look what he got for us. Cheetah. We are the tiger state already. Wonderful, amazing natural reserves we have. We should all, for nothing else, just come for the natural beauty of it and have a wonderful time there. I invite all of you. Defense is another sector. The defense corridor has been announced by Rajnath Singh, which is bordering the Gwalior region, Jhansi. It's right next to us. We already have Jabalpur. We've got a great Air Force base in Gwalior. So that's another area where all of you can look at. Semiconductors. Now I know Foxconn's gone to Gujarat, but then fine. We've got Germany, who's one of the largest investors in our state. You know, Madhya Pradesh is practically a seismic-free zone. When you create semiconductors, well, you need that kind of environment. And I have some foreign dignitaries there. I want to welcome all of you. We've got representatives from Bangladesh, Korea, Malaysia, Netherlands, and Singapore, and Thailand. So I invite all of you. There is tremendous opportunity there. And you know what the biggest asset is? You have a man sitting in the middle. Well, he's the most experienced chief minister in the country today. He's done it all. He's been there. It's the fourth term. I think after Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, who had a great tenure at Gujarat and who taught us how proactively we can work and get the industry. A very small example is what happened to Nano. Tatas were in West Bengal, all of you know. When everything was happening, he was the man who picked up the phone and called Ratan Tata and said, come to Gujarat. And I guess he was waiting for that call and the whole story chain. Look at what's happening now. He himself is doing similar things. He's here to invite all of you. I request everybody here, kindly take out time, block these 2 dates. 11th and 12th January, kindly look at Madhya Pradesh, kindly come to Indore. There's an ocean of opportunities waiting for all of you in the heartland of the nation. Thank you for your time. Thank you very much. Thank you, Honorable Minister. It is indeed an honor and privilege to have Shri Shivraj Singh Chauhan, Chief Minister of Madhya Pradesh, in our midst today. On behalf of the Confederation of Indian Industry, I extend a warm welcome to you, sir, and request you to address us. मध्य प्रदेश के इंडस्ट्री मिनिस्टर आदरणीय श्री राजवर्धन जी, मेरे मित्र सुनील चौरडिया जी, संजय शुक्ला जी, मनीष सीनियर और मनीष जूनियर, हमारी टीम है ये। यहां उपस्थित साउथ कोरिया, जापान, बांग्लादेश, सिंगापुर, नीदरलैंड, मलेशिया, थाईलैंड के सीजी, कनाडा, ताइवान से भी आए हुए हमारे उन देशों के प्रतिनिधिगण और उपस्थित मेरे सभी मित्रों, सबसे पहले तो मैं मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं
और अकेला मैं आपको बुलाने नहीं आया, मध्य प्रदेश आपको बुला रहा है। हम आपको इन्वेस्टर समिट के लिए इनवाइट करने आए हैं। अद्भुत प्रदेश है मध्य प्रदेश। पहले तो मैं इन्फोविंस को बहुत बधाई देना चाहूंगा। इंदौर की मध्य प्रदेश की कंपनी आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग जिसकी हुई है, फिर अभी सिंदूर जी ने और रजनीश जी ने मध्य प्रदेश के बारे में आपको कुछ जानकारी दी है। देखिए, मध्य प्रदेश जन संपदा, जल संपदा, खनिज संपदा, प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर राज्य है। 30% फॉरेस्ट कवर है मध्य प्रदेश में। हमने अपने जंगल भी सुरक्षित रखे हैं। और आज मैं अगर आपके बीच आया हूं तो कोई कर्मकांड करने नहीं आया कि मुख्यमंत्री हैं तो एक बार यह भी करना पड़ता है इन्वेस्टर समिट। मैं ठोस रणनीति बना के आया हूं। देखिए, कोविड काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा आपदा को अवसर में बदल दो, और उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत बनाना है। हमने तय कर लिया आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, और उसका रोड मैप हमने बना लिया। 4 प्रमुख उसके स्तंभ, एक इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन, गुड गवर्नेंस, और फिर अर्थव्यवस्था और रोजगार। और पूरा रोड मैप हमारा तैयार है। आपको ध्यान होगा पीएम ने एक बात और कही कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी भारत को बनाना है। तो हमने कहा $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लिए मध्य प्रदेश बनेगा $550 बिलियन की इकोनॉमी 2026 तक। और हम बनेंगे, बना के रहेंगे। उसका भी रोड मैप हमारा तैयार है। मुझे बताते हुए खुशी है, मध्य प्रदेश तेज गति से बढ़ता हुआ राज्य है। इस साल करंट प्राइजेज पे हमारी ग्रोथ रेट 19.76% है। मध्य प्रदेश का देश की जीएसडीपी में पहले योगदान था 3.6%, अब बढ़ के हो गया 4.6%। हमने हमारी जीएसडीपी को जो पहले 3.5 लाख करोड़ की हुआ करती थी 11.5 लाख करोड़ के पार ले गए। पर कैपिटा इनकम मध्य प्रदेश में कभी हुआ करती थी जब हमने सरकार संभाली थी, तब थी केवल 13,000 रुपया। अब पर कैपिटा इनकम बढ़ के हो गई है 1,37,000। मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं, मैं इसको और तेजी से आगे बढ़ाना चाहता हूं। एक बात और कहते हुए मुझे प्रसन्नता है कि बेरोजगारी की दर अगर देश में सबसे कम किसी राज्य में है तो वो है मध्य प्रदेश, 0.8%। हमने रोजगार के कई अवसर सृजित किए हैं और अभी निवेश भी आमंत्रित करने आए हैं। तो प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है। उसमें मध्य प्रदेश का मैक्सिमम सहयोग हम कैसे करें, इसलिए मध्य प्रदेश की प्रगति, विकास के लिए, रोजगार के नए अवसरों को सृजित करने के लिए, मध्य प्रदेश की संभावनाओं का संपूर्ण दोहन करने के लिए आज मैं आपको आमंत्रित करने आया हूं। अब जो बातें प्रेजेंटेशन में कही गई हैं, अलग अलग संजय शुक्ला जी ने, राजवर्धन जी ने बताई है आपको, मैं उनमें से एक एक को दोहराना नहीं चाहता। बहुत ब्रीफली मैं बताना चाहता हूं। शानदार इंफ्रा है हमारा, 3 लाख किलोमीटर सड़कें हमने बनाई है। एक जमाना था मध्य प्रदेश की पहचान खराब सड़कों के रूप में होती थी। यहां मुंबई में जो लोग बैठे जानते थे, जब महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश जाते थे तो पता चल जाता था कि मध्य प्रदेश आ गया।
लेकिन अब उल्टा हो गया है। अब आप मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र में घुसेंगे तो शायद पता चलेगा आपको। हमारे पास शानदार सड़कें हैं, सिंचाई की जो व्यवस्था है, कभी 7.5 लाख हेक्टेयर मध्य प्रदेश में हुआ करती थी, अब 45 लाख हेक्टेयर हम कर चुके, 65 लाख हेक्टेयर तक ले जाएंगे हम उसको। पानी की पर्याप्त व्यवस्थाएं यहां बताई गई है, और उसके कारण जो खेती हमारी आगे बढ़ी, आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है। गेहूं के उत्पादन में मध्य प्रदेश ने पंजाब को पीछे छोड़ दिया, हम नंबर 1 हैं आज। और एमपी वीट आप जानते हैं, मुंबई वाले भी दीवाने हैं उसके। एमपी वीट के नाम से जितनी ये कंपनी आजकल आती ना आटा बनाने वाली, सोने जैसे दाने, वो हमारे ही होते हैं, मध्य प्रदेश के ही। चाहे बाबा रामदेव हो, चाहे आईटीसी हो, हमारा गेहूं, हमारा बासमती राइस कनाडा, अमेरिका एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं। हमारी दालें, हमारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में अनंत संभावनाएं, और हमारे यहां कोई अशांति नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आज भी हो रही है, कंपनी आती है, अब कई कंपनियां, आईटीसी जैसी कंपनी तुलसी और अश्वगंधा पैदा कर रही, किसान लगा रहे, पहले से बात हो जाती किसान की कंपनी की, कोई असंतोष नहीं होता। आप जो चाहें आप उत्पादित कीजिए। फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में अनंत संभावना है। अभी राजवर्धन जी भी बता रहे थे टेक्सटाइल की हमारी पॉलिसी ऐसी है कि लोग खींचे चले आ रहे हैं, चाहे पंजाब हो, चाहे दक्षिण के हमारे राज्य हो। रेडीमेड गारमेंट्स के क्षेत्र में तेजी से काम हो रहा है। ऑटोमोबाइल में मैं कहता हूं पीथमपुर तो भारत का डेट्रॉइट बन गया है। एक ने को बड़ी कंपनियां हैं। इन्फोवीन्स को आपने देखा, आईटी के सेक्टर में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि कोविड के काल में जब दुनिया को दवाइयों की जरूरत पड़ी तो मध्य प्रदेश के फार्मा सेक्टर ने भी अभूतपूर्व सेवा पूरी दुनिया की दवाइयां हमने एक्सपोर्ट की। दुनिया भर में हमारी दवाइयां गई। हमारा जो एसीजेड है पीतमपुर का, वो कमाल का काम कर रहा है। अलग अलग सेक्टर से टूरिज्म की बात यहां कही, वो सारी चीजें मैं दोहराना नहीं चाहता। और सब पॉलिसी जो हमारी है, अब मध्य प्रदेश के स्टार्टअप्स कमाल कर रहे हैं। 2000 स्टार्टअप से हमारे यूनिकॉर्न भी बन गए, और केवल बड़े शहरों में नहीं, इंदौर और भोपाल में छोटे छोटे कस्बों के बच्चे कमाल कर रहे हैं। कैपिटल वेंचर फंड हमने बनाया, उन बच्चों की हम मदद भी करते हैं। इंक्यूबेशन सेंटर्स मध्य प्रदेश में, और एग्रेसिव पॉलिसीज हमारी। अब वो एक एक पॉलिसी के एक एक प्रावधान के बारे में मैं चर्चा नहीं करूंगा। मैं समझता हूं फोल्डर्स में हमने सारी पॉलिसीज आपको सर्कुलेट की है। अब मध्य प्रदेश ही क्यों, तो आपको बताया गया, मैं फिर दोहराना चाहता हूं। नंबर 1, उद्योग लगते हैं जमीन पे। हमारे पास 1.25 लाख एकड़ का लैंड बैंक मौजूद है। आपको चाहिए आप अभी देख लो, उंगली रख दो, हम दे देंगे आपको। अपेक्षाकृत सस्ती है। मुंबई हो या नोएडा हो, वहां की जमीन की कीमत और मध्य प्रदेश की जमीन की कीमत में जमीन और आसमान के अंतर है। तो जमीन की उपलब्धता, 24/7 पावर। मध्य प्रदेश पावर सरप्लस स्टेट है। एक जमाना था जब बिजली नहीं हुआ करती थी कभी, अब तो पावर में भी केवल थर्मल नहीं, सोलर में भी हम कमाल कर रहे हैं। अभी सिंदूर जी आपको बता रही थी। और मध्य प्रदेश में हमारा एक सोलर प्लांट लग रहा है, फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट। ओमकारेश्वर डैम में हम सोलर पैनल बिछा के
और हम 600 मेगावाट बिजली का उत्पादन करने वाले, बाकी डैम भी बहुत है हमारे, इंदिरा सागर है, गांधी सागर है, बरगी है। आप भी ट्राई कर सकते हैं। जमीन पे काहे को, पानी में भी बिजली बनाइए ना। हम पानी से भी बिजली बनाते हैं और पानी पर भी बिजली बनाते हैं। हमारे पास बाकी उद्योगों के लिए भी पावर की कमी नहीं है। अब विंड के क्षेत्र में भी काफी उत्पादन हमारा बढ़ा है। और वे तीसरी सबसे बड़ी चीज है, आपके पास जमीन भी है, आपके पास बिजली है, पानी है, फिर स्किल्ड मैन पावर। अभी शायद रजनीश जी ने जिक्र किया था, हमारे यहां IIT, IIM, सिंगापुर के मित्र बैठे हैं। सिंगापुर के सहयोग से हमने ग्लोबल स्किल पार्क बनाया भोपाल में। अब जैसी स्किल्ड मैन पावर चाहिए वो हमारे पास उपलब्ध है, और नहीं तो आप कहोगे तो आपके साथ मिलकर हम ऐसी योजना बना लेंगे कि हम वहीं ट्रेंड करके लोगों को काम दे सकें। हमने मॉडल ITI बनाई है, अलग अलग आधुनिक जरूरतों के मुताबिक हमने अपने बच्चों को ट्रेंड किया है। स्किल्ड मैन पावर, और 24 घंटे हमारी बेटियां भी काम करती हैं, 3-3 शिफ्ट में। कोई प्रतिबंध नहीं है। शांति का टापू है मध्य प्रदेश, कोई गड़बड़ है नहीं। वहां दिन में जाओ, रात में जाओ। एक जमाना था जब कभी मुंबई में फिल्में बनती थी, डाकू पान सिंह, डाकू मलखान सिंह, डाकू फूलन देवी। हमने मध्य प्रदेश में जब मुख्यमंत्री बने तो कह दिया कि मध्य प्रदेश की धरती पर या तो शिवराज रहेंगे या डाकू रहेंगे, दोनों एक साथ नहीं रह सकते भाई। सारे साफ। अब कोई ऐसा ग्रो फ्रो नहीं है मध्य प्रदेश में। और उसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में औद्योगिक अशांति नहीं है, मैंडेज लॉस नहीं है। चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, ये मध्य प्रदेश में नहीं है। सब प्रेम से रहते हैं, मालिक हो, साथ में काम करने वाले। मध्य प्रदेश सचमुच में ऐसा प्रदेश है कि अगर आप मध्य प्रदेश जाएंगे तो ये लगेगा ही नहीं कि आप किसी दूसरे प्रदेश में आए। न पूरब, न पश्चिम, न उत्तर, न दक्षिण। जैसे दूध में शक्कर मिलके एक हो जाती, मध्य प्रदेश में आने वाला मध्य प्रदेश का ही हो जाता है। सब आपड़ा मानुस आहे, कोई बाहर का नहीं है। दिल इतना बड़ा है कि दिल में सबको, सब देश के दिल में सब समा जाते हैं। तो आपको कोई समस्या नहीं आती। और ऐसा भी नहीं है कि कोई चढ़ाई कर रहा हो, उद्योगपति पे लगाइए तो ला। ऐसी सब चीजों से दूर है मध्य प्रदेश। साफ सुथरा काम। और मैं ये भी निवेदन करना चाहूंगा, हमारी टीम यहां बैठी है। आज भी हम एक नहीं, कई 1-to-1 मीटिंग्स है हमारी। प्रपोजल यही हम फाइनल कर रहे हैं। और आपको इन्वेस्टर समिट के लिए निमंत्रित करने आए, लेकिन तब तक भी इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अगर आज ही मिलना तो मिलो, मैं रात भर जग लेता हूं। 8 बजे तक का तय है, उसके बाद भी रात में बैठना हो तो बैठ सकते हैं। अपन में 24/7 काम करने की क्षमता है। और यहां नहीं तो भोपाल में मिले, भोपाल में नहीं तो इन्वेस्टर समिट में मिले। जो हम दे सकते हैं तत्काल हम क्लियर करेंगे। घूमना फिरना, चक्कर लगाना, उसकी जरूरत नहीं है। ब्यूरोक्रेसी भी पूरी तरह से सपोर्ट करती है। और फिर मैं विश्वास के साथ कहता हूं, मध्य प्रदेश क्यों आए? इसलिए कि मैं हूं, मैं निवेश चाहता हूं, मध्य प्रदेश की प्रगति और विकास चाहता हूं। इसलिए आज पूरे आत्मविश्वास के साथ आपको आमंत्रित करने आया हूं। आप इन्वेस्टर समिट में आइए। उसके पहले प्रवासी भारतीय सम्मेलन हो रहा है 8, 9, 10 जनवरी को। देश भर के NRIs इंदौर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश सबसे साफ सुथरा प्रदेश भी है। इंदौर ने तो स्वच्छता में छक्का मारा है, लेकिन स्वच्छतम प्रदेश भी आज हिंदुस्तान का मध्य प्रदेश है। ओवरऑल स्वच्छता में हम नंबर 1 हैं। और गांव में भी से, केवल शहरों में नहीं।
साफ सुंदर परिवेश आपको मिलेगा। अलग अलग सेक्टर्स के लिए अलग अलग इंडस्ट्रियल एरिया हमारे पास है। चंबल के बीहड़ जहां कभी डाक हुआ करते थे, वहां हम अटल एक्सप्रेस वे बना रहे हैं। श्योपुर, भिंड, मुरैना, बीहड़ों के बीच से सड़क जा रही है और आसपास हमारे पास जमीन मौजूद है। हम इंडस्ट्रियल टाउनशिप बना रहे हैं। वैसे एक नर्मदा एक्सप्रेस वे बन रहा है, अमरकंटक से लगा के ठेठ पूरे मध्य प्रदेश के बीच में से गुजर के लगभग 950 किलोमीटर का नर्मदा एक्सप्रेस वे। उसके आसपास भी हम नई टाउनशिप, इंडस्ट्रियल क्लस्टर, हम ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बना रहे हैं इंदौर के पास। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो, नई टेक्नोलॉजी का उपयोग हो। अब उज्जैन में हमने महाकाल महालोक बनाया है और रेलवे स्टेशन से बाय रोड जाते थे तो अब रोज लगभग 1.5 लाख लोग तो अभी आ रहे हैं। तो हमको लगा कि जमीन पे ही काय को चले, आसमान में चले। तो सीधे रेलवे स्टेशन से केवल कार चलेगी हमारी, महाकाल लोक उतरेगी। और एक शहर में नहीं, कई शहरों में हम कर रहे हैं। मैं बहुत विस्तार में नहीं जा रहा हूं, आप जरूर आइए। टूरिज्म के लिए आपको काफी बताया। आप देखिए, मध्य प्रदेश पहले टाइगर स्टेट था, फिर लेपर्ड स्टेट बना, अब हम चीता स्टेट भी हो गए हैं। बल्चर स्टेट भी हम ही हैं, गिद्धों को भी हमने सुरक्षित रखा है। और इसलिए आइए, मध्य प्रदेश आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में 8, 9, 10 एनआरआईज का सम्मेलन, 11-12 इन्वेस्टर समिट, उसके बाद खेलो इंडिया यूथ गेम्स भी मध्य प्रदेश में ही हो रहे हैं इस बार। खेल प्रेमी उसमें भी आ सकते हैं और निवेश करने आए तो ठीक है जनाब, नहीं तो घूमने ही आइए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। कृपया करके बुक कीजिए, अभी से ब्लॉक कीजिए। 11 और 12 जनवरी निवेश का एक नया इतिहास लिखेगा मध्य प्रदेश, और देश की प्रगति और विकास में मील का पत्थर साबित होंगे ये 2 दिन। दुनिया भर से भी लोग आ रहे हैं, उनका भी स्वागत है। क्योंकि एक हमारा विश्वास है, भारत का विश्वास, कि सारी दुनिया ही एक परिवार है। यम निजम पराबेत्ति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम। तो सारी दुनिया ही को हम निमंत्रण दे रहे हैं। और मोदी जी के नेतृत्व में मेरा तो विश्वास है कि भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन कोई कराएगा तो भारत कराएगा। और वैसा भारत बनाने में मध्य प्रदेश भी अपना योगदान दे रहा है। आप पधारिए। फिर कह रहा हूं, अकेला मैं नहीं, मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता आपको पुकार रही है। इंदौर में मिलेंगे 11 और 12 जनवरी को। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Honorable Chief Minister, for your address. And now to propose the vote of thanks, may I call upon Mr. Manish Singh, Managing Director, Madhya Pradesh Industrial Development Corporation. Honorable Chief Minister, Shri Shivraj Singh Chauhan ji, Honorable Industries Minister, Shri Rajvardhan Singh Dattigaon, respected Principal Secretary, Sanjay Shukla sir and Manish Singh sir, officials of the state government. First of all, I would like to thank honorable dignitaries present from various consulates and various high commissioners, especially Consul General from Korea, from Singapore, from Malaysia, from Thailand, from Netherlands, and many other countries, and also from Bangladesh. Under the visionary and committed leadership of our Honorable Chief Minister, the whole trajectory of industrial development, we are seeing a fast pace in that. The bureaucracy is committed, the local administration is very supportive, and peace is there. It's a peaceful state. It's all due to regular monitoring and regular supervision and regular reviews done by Honorable Chief Minister. I would also like to thank knowledge partner aid by
our national partner CII, our officers from MPIDC, from media and from local administration who made this event successful. I again thank you all and would like you to meet again in the coming global investor meet at Indore on 11